Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, today I am going to start the chapter number 3 of the book, and this is related with the theory. Dear students, this chapter is very important, and the name of chapter is accounting principles. और बेटा principles का मतलब क्या है? Rules and guidelines. That means accounts has to be prepared according to the rules and guidelines prepared by, there is a organization ICAI, Institute of Chartered Accountant of India. Norms or rules of accounting to maintain uniformity in accounting. You may be asked what are the objectives of accounting principles. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी, यानी एक समान, सब जगह एक रूल अप्लाइड हो. सिंस दे आर फीचर्स, they are man-made, it is flexible and generally accepted, that is we call it GAAP, generally accepted accounting principles. अब बेटा accounting principles are man-made, it should be ready to accept the changes, and GAAP, generally accepted accounting principles, it is prepared by the ICAI. अब बेटा कैटेगरी ऑफ AP का मतलब हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इसके दो पार्ट्स है बेटा, एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब हो गया फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस. कन्वेंशंस का मतलब होता है ट्रेडिशन, मतलब आउटकम्स ऑफ द अकाउंटिंग ट्रेडिशन. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव 3 assumptions of accounting principle: going concern concept, consistency concept एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट. और बेटा ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द बिजनेस. अब ये लॉ क्या कहता है बेटा? द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फॉरसेबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज बिजनेस. अब बेटा कोई भी बिजनेस शुरू करता है, वो इस एम से स्टार्ट करता है कि बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चलेगा एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन, एंड दिस इज ओनली अजम्पशंस. डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. यानी कैपिटल और रेवेन्यू आइटम दोनों को हम लोग अलग अलग करते हैं. क्लोज डाउन विद इन 2 months. अगर बिजनेस बेटा 2 महीने के अंदर बंद हो जाता है, नो मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. इसका मतलब क्या है? Business must continue at least for 2 years, 3 years, 4 years. Similarly, distinction between capital expenditure and revenue expenditures are made because of this concept. It is also because of the going concern concept that outside parties enter into long-term contracts with the enterprise, give loans and purchase the debentures and shares of the enterprise. Why? Because they believe that business will continue for an indefinite period of time and there is no intention to close down the business. So beta, you may write the short notes on going concern. The second method we have consistency concept. Consistent matlab once you have selected one method, that method should be allowed throughout the year. This concept states that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. I can cite one example. We have 2 methods of charging depreciation. अब depreciation क्या बेटा? Fall in the value of assets. There may be SLM and WDV. SLM straight line method, WDV written down value method, and same accounting practices. Accounting practices can be changed only if law requires, if accounting standards required, and C, for better presentation of the financial statements. However, the nature and effect of the change of method and justification for the change must be stated clearly by way of footnotes. यानी नोट्स नीचे लिखना पड़ेगा to enable the users of the financial statements to the aware of the change. That means अगर बेटा आप अपना मेथड कोई चेंज करते हो, तो this should be shown as a footnote to the items. So beta, today you will write down the short notes on
first going concern concept and consistency concept. In the next video, we will discuss next concept.